reinvent. So dear students, if you're working on any project and if it is failed at any point, don't get disheartened. Just try and try again, and by this you can make new innovations and contribute very well to our society. So now I invite Dr. Neelam Sharma, Dean Sciences and Coordinator of this event, to formally extend welcome to our close person of the day, Madam Neelam Sharma. नमस्कार, मैं डॉक्टर गुरविंदर सिंह जी सैमीकंडक्टर लैबोरेटरी मोहाली चंडीगढ़ ਦਾ ਹੰਸਲ ਮਹਿਲਾ ਮਹਾਵਿਦਿਆਲय स्वागत करते हाँ। ਅਸੀਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਾਇੰਸ ਵੀਕ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਦੇ ਉੱਚੀ ਪੱਧਰ ਦਾ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਦਰਮਿਆਨ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਫਖਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ इसरो का सफर, इसरो के बनने का सफर शुरू हो गया सी जदों विक्रम साराभाई के अनथक प्रयासों के नाल इसरो की स्थापना हुई। उस समय भी साडी साइंस, भारत की साइंस उच्ची सीमा से पहुंची हुई थी और लोग ते दिल नाल इत्थे काम कर रहे सन। पर साइंस ने साडी लाइफ इतनी कंफर्टेबल बना दी है कि इसरो तो जर्नी जी शुरू हुई उतों असीं चंद्रयान तक अज पहुंच गए हाँ। आजादी तो पहले ही जो पहला रॉकेट है वो छड्या गया सी, उसदे बारे असीं पढ़दे हां। अज तुहाडे को उस यात्रा दे असीं संस्मरण सारे सुनांगे। तो मैं एक बार फिर तुहाडा स्वागत करती हाँ और मैं तुहाडी बहुत थैंकफुल हाँ, तुसीं अपना कीमती समा कढ के साडे दरमियान आए और साडे बच्चों को मोटिवेट करोगे कि वो साइंस नू अगे ले जान और मैनकाइंड लई, ह्यूमन काइंड लई जिहड़ी साइंस है वो बहुत बेनिफिटिंग हो सकती है। नीलम मैडम ने बहुत अच्छे वर्ड्स से शुरुआत की थी ते मैं अपनी प्रेजेंटेशन शेयर करने जा रहा हूँ। जितने भी डिग्नेटरी जो बैठे हुए हैं उससे स्टूडेंट ते टीचर्स, उन्होंने मेरा सारा सत श्री अकाल, नमस्कार ते जय हिंद। आज मैं 75 ईयर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस डे प्रोग्राम से जो डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने शुरू किया उस अपने एक विचार साझे करांगा जिहदे कि इसरो की आर्यभट्ट उपग्रह को लेकर चंद्रयान तक की यात्रा इस बिना डॉक्टर विक्रम साराभाई के नाम तो शुरू करे बिना मैं लगता कि इसरो की शुरुआत नहीं हो सकती, क्योंकि साराभाई इंडियन स्पेस प्रोग्राम का उन्होंने पितामह माना जाता है, फादर माना जाता है। वो एक महान संस्थान निर्माता थे जिन्हें कि उन्होंने बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशनों का निर्माण किया। डॉक्टर विक्रम साराभाई का जन्म अगस्त 1919 गुजरात के अहमदाबाद शहर में होया। ग्रेजुएशन के बाद वो अगे इंग्लैंड कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी पढ़ाई करने वास्ते चले गए ते उन्होंने उत्थे कॉस्मिक स्पेस ते स्टडी किया। ते जदों सैकेंड वर्ल्ड वार स्टार्ट हुई तो वो वापस इंडिया आ गए हुए, जेडे की फर्स्ट जो टारगेट सी जो कि 7 साल पूरा होया, जिन्हों की पहला सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल कहा जाता है, ते वो लॉन्च किया। इस तरह जो है अगे और कड़ियां बढ़ती रही हैं। इसरो जो है छोटे छोटे स्टेप लेके आज मंगलयान या चंद्रयान दी या फिर गगनयान दी से जा रहा है। The journey of Indian Mars orbiter with destination to nearly 9 months ago. This awesome event was a giant leap by a country in the field of space exploration, preceded by series of steps that began nearly 60 years ago. In 1960, Dr. Vikram Sarabhai threw up a challenging question. Why can't we launch our own rockets and spacecraft from it? How can we bring the benefits of space technology to solve the basic problems of our
was Indian Space Research Organization. ISRO was established by the Government of India in 1969 with an aim to harness the benefits of space technology for the real problems of man and society. The Indian space program has grown by leaps and bounds, leading to the development of many satellites, rockets, and has now taken us to the moon and Mars. Today, many Indian satellites are orbiting the Earth. They have learned many complex technology. ISRO's satellites touch our lives in many ways. When we turn on our TV or pick up the phone, we are probably tapping into the networks of communication satellites like INSAT and GSAT. Many organizations also depend on these networks for e-governance, disaster management, weather forecasting, search and rescue operations, and so on. While remote sensing or the Earth observation satellites support our mission in the field of agriculture, ocean monitoring, and many more. You may have heard that India now also has its own constellation of IRSS or NAV, that is, Navigation with Indian Constellation spacecraft. They are placed in their intended orbit are indigenous launch vehicles, PSLV, or the Polar Satellite Launch Vehicle in the rural workforce, with the capability to launch multiple satellites in a single launch. ਇਸ ਮੂਵੀ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਜੋ ਅਰਥ ਆਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਸੈਟੇਲਾਈਟਸ ਹੈ ਜਾਂ ਰਿਮੋਟ ਸੈਂਸਿੰਗ ਸੈਟੇਲਾਈਟਸ ਹੈ ਉਹ ਮੈਨਕਾਈਂਡ ਦੀ ਹੈਲਪ ਲਈ ਕਿੰਨੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ ਤੇ ਇਸ ਜਰਨੀ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ISRO ਦੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਤੇ ਲਾਂਚ ਵਹੀਕਲ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੇਖਿਆ। ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਸੀ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਉਹ ਆਰਿਆਭੱਟ ਸੀ ਤੇ ਜਿਸਦਾ ਨਾਮ ਜੋ ਹੈ ਇੱਕ ਭਾਰਤੀ ਵਿਗਿਆਨਿਕ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਸਾਇੰਟਿਫਿਕ ਤੇ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟਲ ਮਿਸ਼ਨ ਸੀ ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਚ ਕੀ ਐਸਟਰੋਨੋਮੀ ਤੇ ਸੋਲਰ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਦਾ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਨੂੰ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਫਸਟ ਲਾਂਚ ਜੋ ਹੈ 1975 ਅਪ੍ਰੈਲ 19 ਚ ਰਸ਼ੀਆ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜੀ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟਲ ਸੈਟੇਲਾਈਟ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਸੀ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਨ ਸਿੰਕਰੋਨਸ ਪੋਲਰ ਆਰਬਿਟਰ ਲਾਂਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਐਕਟਿਵ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਸੀ।
science is a way of thinking much more than it's a body of knowledge. So to encourage this thinking and imbibe scientific temperament among the young minds, PSA, Ministry of Culture, Government of India, in association with Vigyan Prasar, are celebrating Vigyan Sarvatra Pujate at HMV under the nodal agency Punjab State Council for Science and Technology. I would like to invite our very enthusiastic and charismatic Mrs. Meenakshi Pyal to welcome our guest, Dr. P.K. Ahluwalia, for this afternoon session. So, आज हम यहाँ पर सभी इकट्ठे हुए हैं एक विज्ञान का उत्सव मनाने के लिए। ये 7 days विज्ञान सर्वत्र पूज्यते साइंस को समर्पित, ये साइंस को समर्पित, इसमें असल में 28 जो है दैट इज नेशनल साइंस डे, और इस बार आजादी का अमृत महोत्सव 75 इयर्स की वजह से इसको वीक सेलिब्रेट किया जा रहा है, नेशनल साइंस वीक, और उसका नाम दिया गया विज्ञान सर्वत्र पूज्यते। और इसका भी एक रीजन है कि जो विज्ञान है ये पूजनीय है, हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में शामिल है। आज इस टाइम हमें बहुत अच्छा लग रहा है कि हमारे साथ जुड़े हैं एक ऐसे साइंटिस्ट जो कि भौतिक विज्ञान को, फिजिक्स को इस तरह से जानते हैं कि रोजमर्रा की अपनी जिंदगी में जब हम सुबह उठते हैं वहाँ से लेकर के शाम को सोने तक हम इस फिजिक्स को, इस साइंस को कैसे यूज करते हैं। इस साल भी इन्होंने हमें बहुत अच्छा रोड मैप दिया है फिजिक्स को, साइंस को प्रमोट करने के लिए। सो सर, आज ऑफलाइन मोड पे ना आकर के ऑनलाइन मोड में सही वर्चुअल मोड पर हम हंसराज महिला महाविद्यालय में आपका स्वागत करते हैं। Please join me to welcome Dr. P.K. Ahluwalia with a big round of applause. Topic is very interesting. As ma'am said, Vigyan Sarvatra Pujyate. Let me just go to my presentation. I will take a minute and then I will be back with you. Kaleidoscopic view of human development through science and technology. Impact of innovation of human development through science and technology. What am I going to talk with you? I have come to you in a case study mode to convince you that indeed in the last 200 years, science and technology has influenced almost every human activity around us. We are part of that. Each one of us is a part of that. And I think thanks to this intervention of science and technology, that despite one of the unseen pandemic through which we are passing, we as teachers have been able to link with our students in many modes, not just one. Throughout my career in science for the last almost 40 years. So this is very interesting part of whole of the scenario which we are actually talking about. So let me proceed further and come to that fellow, that great man, that Bharat Ratna, in whose memory we are actually celebrating this Science Week. Despite the fact that we have now almost 75 years of independence with us. What was so great about it? You know the kind of things with which he worked. If somebody tells us today that he worked with this kind of an instrument, we start wondering how could he imagine that this kind of an instrument can be used for discovering an effect which is known after his name called Raman effect. It's unimaginable. A simple spectrometer, and he in fact invented a very intense source of light so that he could see the Raman spectra of something which he was studying at that point of time. One thing more I would like to tell you.
he was and his colleagues, they were all, highly motivated people, and they wanted to make a mark in an era when quantum mechanics was making great use, followed by Shri Satyendranath Bose. You might have heard this name as S.N. Bose. If you are a student of physics, you might have heard that we have a class of particles in nature. Almost 50% of the particles in nature are bosons. Bosons are the ones which have what we call integer spin. So this is the man to whom we are dedicating this particular week. And he was responsible for creating world-class research institutes in our country. So know that he is a great celebrity in science. Why? Because he was a person who tried to look at some organized knowledge created before him. He was knowing about a man called Oersted, who had done a beautiful experiment in which he had demonstrated that if there is a current carrying conductor, and if we bring a compass needle before it, we will find that the compass needle will start showing us reflection. So this was my first case study. Now we are a part. If I am talking to you, I am part of the World Wide Web. My sound is coming to you, my picture is coming to you, my screen is coming to you. It's thanks to this man whom you are seeing on the screen. His colleagues call him Tim. And he was working in one of the latest modern labs in Geneva, which is known as CERN. It is a particle physics lab where that particle of God has been seen and verified. And he was, apart from his assignment as a particle physicist, he was also, looking after the network of that lab. Normally, physics people are given such responsibility because people think that they know all these things. So he was given that responsibility. And he was responsible for maintaining the network, receiving complaints and responding to those so that the network kept on working. One day, one of his colleagues, a scientist, came to him and he said that, Tim, can I imagine that when I am reading a research paper, and in that research paper, if a reference comes, and if I click on that reference, can I open that paper which has been referenced? So Tim said, yes, I have a technology of that kind. In fact, when I receive your complaint, I create one such click, and I am able to see what is your complaint and how I have addressed it. So he demonstrated that. And for that, he had created a language which is known as HTML, Hypertext Markup Language.